Hello and अस्सलाम वालेकुम everyone. Welcome again to दूसरा व्यू पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 28. और ये वही पॉडकास्ट है जो प्लेलिस्ट है जो एक ही प्लेलिस्ट है बेसिकली जो लाइव फॉर्मेट में आती है और बड़ा मजा आता है आप सबके साथ पॉडकास्ट करने में लाइव जाने में. तो शुरू करने से पहले बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि कई लोग होते हैं जो बाद में इस एपिसोड को देखते हैं जब लाइव नहीं होता. तो इन केस यू वांट टू जॉइन अस चैट विद अस इन द लाइव चैट तो बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम लाइव जाया करें आप लोगों को पता चल जाए. और अगर आपने ऑब्वियसली सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप हम सारों को इस लाइव कंटेंट के साथ ज्वाइन करने में आपके लिए आसानी हो. तो ये बात होगी थोड़ी बहुत. अब आज हमारे पास बहुत टॉपिक्स हैं बात करने के लिए. वर्ल्ड में ऑफ क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इज ऑन द ब्रिंक. फाइनल आ चुका है हमारे सामने. PSL शुरू होने वाली है. और भी बड़े छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहे थे. उनके ऊपर जाने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू गाइस हाउ आर यू डूइंग. अली विल स्टार्ट विद यू. कैसा गया आपका हफ्ता और welcome back to the podcast. Thank you so much. Alhamdulillah, very good, bro. ठीक ठाक हूँ alhamdulillah. बहुत अच्छा हफ्ता गया. Lockdown में मगर चलो चलता है वो तो साथ साथ. Got vaccinated too. So I'd say everyone watching, please go get vaccinated as soon as possible. Book your appointments and get on with it. यही बात है. मुआज आपके साथ सारे हालात ठीक है. अभी लॉकडाउन में मुझे पता है it's quite frustrating till now. Yeah, bro, it's tough. लेकिन at least अब मैं work पे जाता हूँ तो that's my only reprieve कि सुबह उठ के कपड़े पहन के at least काम पे तो जा सकते हैं. लेकिन फिर वही वापस आओ तो कहीं निकल नहीं सकते. Gym बंद, all restaurants closed. मना भी किया हुआ किसी से गैदर नहीं करो तो फिर वही घर पे बैठे रहो. And yeah, तो लेकिन podcast ही at कुछ least देख. exactly at least we have something to look forward to by the end of the week. Joining Exactly. everyone over here in the podcast discussing the game we all love और जो देख रहे हैं उनको भी गेम अच्छी लगती है तो उसके बारे में ही शुरू करेंगे. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर पहले जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है. उसका फाइनल आ रहा है 2 साल बाद. 2 साल हो गए हैं इस पूरे टूर्नामेंट को कह सकते हैं आप इस पूरी लीग टाइप चीज को. और अब दो फाइनलिस्ट कौन है इंडिया और न्यूजीलैंड. The biggest two test sides in the world right now. So it's going to be one hell of a final. It's going to be played in England और उसके कुछ रूल्स भी सामने आए हैं फाइनली. ड्यूक बॉल यूज होगी अपेरेंटली जो इंग्लैंड में बहुत यूज हुई है. इसके ऊपर बात करेंगे किसको ज्यादा फायदा होगा इस बात से. उसके अलावा एक रिजर्व डे भी स्केड्यूल हुआ है जून 23 को विच इज अ पॉजिटिव इन केस वो टाइम ना कवर अप हो सका क्योंकि आप जैसे आप लोगों को पता है टेस्ट मैचेस के अंदर इवन इफ यू मिस टाइम इट कैन बी कवर्ड अप इन द टेस्ट मैच इटसेल्फ. कभी जल्दी शुरू कर लेते हैं बाद में. लेकिन अगर ना हो सका तो जून 23 इज द डेट फॉर दैट. लेकिन there will be a joint winner in case of in case of tie or a draw. और अगर आप लोगों को नहीं पता टाई और ड्रॉ दो अलग चीजें हैं. टाई होता है जब बिल्कुल ही सेम स्कोर हो टेस्ट मैच में एंड बिलीव इट और नॉट इट हैज हैपेंड बिफोर. इंडिया के साथ एक बार ही हुआ इन हिस्ट्री एंड कपिल देव वाज द कैप्टन. और ड्रॉ मैच तो आप लोगों को पता है जब 5 दिन पूरे खेले जाते हैं. तो इन केस ऑफ दैट वी आर गोना हैव जॉइंट विनर्स एंड न्यूजीलैंड again is not going to hope कि ऐसी कोई चीज हो after the World Cup 2019 thing happened with them. So इसके ऊपर जाएंगे. सारे स्क्वाड के ऊपर भी मैं बात करूंगा कि कौन कौन इंक्लूडेड है और फिर हम अली और मुआज और मैं डिस्कस करेंगे कौन से प्लेयर्स हैं लुक फॉरवर्ड करने के लिए इस टूर्नामेंट में. सो वी जस्ट गोना स्टार्ट ऑफ विद द इंडियन स्क्वाड फर्स्ट देन आई एम गोना मूव इट ओवर टू मुआज हु इज गोना टेल अस कि कौन से प्लेयर्स हैं जिनके पास चांस है प्रूव करने के लिए कि दे आर ट्रू चैंपियन ऑफ टेस्ट क्रिकेट. सो इंडियन स्क्वाड रोहित शर्मा, शबनम गिल, मयंक अग्रवाल, चितेश्वर पुजारा, विराट कोहली कैप्टन, अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, शरदुल ठाकुर, उमेश यादव, KL राहुल सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस. दैट वाज कल की ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी वो स्टिल सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस. और अगर आप लोगों को इसके पास कोई अपडेट है प्लीज शेयर करें. और वृद्धिमान साहा द विकेट कीपर. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और बी टीम के बारे में बात होती है इंडिया के बारे में सी टीम लेकिन दिस इज सर्टेनली द ए टीम ऑफ द इंडियन साइड. तो Moaz, I'm just going to turn it over to you. Of these players, who are we really looking forward to taking the match away from New Zealand? Bro, of course we look at the same at the players who performed in Australia. Rishabh Pant, he's one of the guys who you always look out for, even in form or not. वही की बंदा है जो कहते थे X factor है टीम में. उसको देखते रहो. मतलब you can't look away when Rishabh Pant is batting. That's what all the commentators say. Yeah. तो मैं कह सकता हूँ he is the guy to look out for. Shubman Gill, another exciting batsman, top order player. He hasn't scored the runs which he wants, लेकिन I think he might come good in England. He looks good, अच्छा player है, and I think he should. I wish he scored some runs. Wow.
And of course, apart from the batting, I'll say the player to look out for are the fast bowlers. इंडिया की टीम इधर से बेहतर हुई है पिछले 1-2 साल में, और उनके वही फास्ट बॉलर्स मोहम्मद शामी, बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, या whoever they decide to make their three fast bowlers. I would say as a contingent, I would look out for these guys because in swinging conditions, in express pace, it'll be tough. ठीक है, बड़ी हैरत की बात है कि जो आपने शुरू में नाम लिए बड़े यंगस्टर्स के नाम थे, हालांकि इंडियन टीम में बहुत और नाम भी हैं. अली, आपको क्या लगता है who's going to really stand out for this Indian team? I feel like देखो first of all जो इनका नया बॉलर है मोहम्मद सिराज, he did amazing bowling in Australia. उसके बाद IPL भी खेला है अभी, तो उसमें भी काफी अच्छी बॉलिंग की है. I feel like that's going to be one of their key bowlers. They're dark horses, you can say, in the team. Apart from that, feel like Ajinkya Rahane, the century he scored back in Australia, he has the momentum behind him. So I feel like, if he can get his some runs under his bat, it's going to be very good for the Indian team. और go on. मोस्ट एक चीज है कि आई मीन इनके जो मेन फास्ट बैट्समैन है, कोहली, रहाने, पुजारा, मतलब these are the guys I expect to perform. These are the guys who I would say 8 out of 10 days they should be scoring at least a 50 in a test match. So I would say these guys do stand out, लेकिन they're at that level where you don't have to pick point them to stand out. इतने ज़्यादा नामों में से पिक भी कौन करे बंदा भाई, इतने नाम है, अगर पिक करने पे हो सारी पिक करनी पड़ेंगे, लेकिन मैंने एक बंदा पिक किया. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक पूछना चाहता हूँ, do you see Rohit Sharma playing in this test match? Ali, what about you? Do you see him playing? I feel like he can play he can open with Shubman Gill. I see him playing as well. You see him playing. What about you, Mars? I mean, ideally in a perfect world, yeah, maybe I would like Rohit Sharma to play, but I don't think he would, because in test में he's not right established as an opener. अभी he कभी middle order में लेके आ जाते हैं test में. I know as in the ODI scene he's for sure the perfect opener. लेकिन test में the fact that I can't easily say that means कि I'm not 100% sure if he will be in the best 11 for an Indian test squad. Especially with the Duke ball being used, we might not see Rohit Sharma in the team. Go on. One more thing I wanted to ask you guys: what do you guys think of of Prithvi Shaw, of him not being in the team? यार इतने ज़्यादा नाम हैं, तो I'm not really missing Prithvi Shaw, if I'm being very honest with you. मतलब इतने नाम हैं भाई, कितने नाम चाहिए आपको? The hype that was created behind that guy, I feel like we needed to discuss him. Hype train उसकी हाइप ट्रेनिंग खत्म हो गई थी जब उसके टेक्निक को डिस्ट्रैक्ट कर लिया था. His lack of foot movement against the moving ball and the Duke ball, they're going to eat him up. Have volleys outside out, drive it, and the slips are waiting. All right, guys, before we just move on to the next topic, मैं बस बताना चाहता हूँ the player to look out for. अभी न्यूजीलैंड की वो बात करेंगे, लेकिन the player to look out for me is going to be विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली का ये जो टेस्ट मैच है वो एक्चुअली MS धोनी के साथ टाइड है फॉर लीडिंग इंडिया इन द मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस एवर. और इस टेस्ट मैच के बाद जो फाइनल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का, उसमें वो इंडिया की लीडिंग कैप्टन बन जाएंगे, हु हैज लेड इंडिया इन द मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट, व्हिच इज क्रेजी. और प्लस मैंने देखना है कि क्या वो अपनी सेंचुरी मार सकेंगे. उतना टाइम नहीं हुआ टेस्ट सेंचुरी को जितना टाइम हुआ ओडीआई सेंचुरी को, लेकिन फिर भी सेंचुरी ड्राउट है विराट कोहली पे. बहुत आंखें उन पे होंगी. ही इज द कैप्टन. अजिंक्य रहाणे नीचे से आ रहे हैं ऊपर, तो ऑल आइज ऑन विराट कोहली एंड आई होप ही जस्ट नॉक्स इट आउट द पार्क. इसके साथ ही चलते हैं न्यूजीलैंड की टीम पे. मौज, मुझे पता है आपको बड़ा एक्सपीरियंस है इनके कुछ प्लेयर्स के साथ. सो द प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर मी फॉर द न्यूजीलैंड टीम इज ऑब्वियसली द कैप्टन केन विलियमसन. और उसके अलावा बोल्ड की बड़ी बात हो रही है, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज देखी थी उन्हें पता है कि जेमिसन कितना 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 तेज बॉलर है और कितना कितना मतलब यूजफुल बॉलर है. बेसिकली मैं बोलना नहीं चाह रहा जो मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कितना यूजफुल बॉलर है कि उसकी बाउंस कैसे ट्रबल करती है बैट्समैन को. वी आर लकी इनफ टू हैव मुआज ऑन द चैनल राइट नाउ हु हैज प्लेड जेमिसन. तो मुआज, आप बस बता दें कि जेमिसन और बाकी प्लेयर्स, वेयर डू यू सी न्यूजीलैंड इन दिस टेस्ट मैच? I see New Zealand very well positioned and well balanced. उनकी team I think काफी settled है, and I'm pretty sure they know who their best 11 already is. But from their fast bowlers, it's going to be Bolt and Saudi opening the bowling. You have Kyle Jamieson as the first string guy, and then when you want a workhorse to bang the ball in to keep the oversight, there's Wagner.
So like New Zealand is a very settled bowling lineup, and I think bowling उनकी bowling is very tight. So I think from that point they're covered very well. और yeah उनकी बैटिंग भी देख लो कि there's no question marks. Maybe a couple of guys here and there, लेकिन वरना their batting looks settled too. Williamson है, Latham है, the experience Taylor है. yeah Like experience is there. Daryl Mitchell is there. Naya, he's scoring. Colin DeGrandholm is there as well. mm, Matlab, they have a pretty good bowling lineup and batting lineup too. So I think New Zealand अच्छी position पे है to come into this test match. And I think barring any heartbreaks and close yeah calls, I would pick New Zealand as my winner for all the right test championship. ठीक है just coming to this question specifically Moaz just going to start with you because you started off who do you see winning and who do you want to win मतलब who do you want winning ये दो अलग चीजें हैं दोनों Um, बताएं who do I want to win? I want Uh, I would say I want New Zealand to win, not because of any other like, oh, I don't want Indian to win and stuff like that. Because New Zealand has many heartbreaks in the past. So I think यही जो बात अभी वर्ल्ड कप के साथ जो हुआ था इनके साथ एंड इन जनरल जो विलियमसन के साथ सुपर ओवर्स में होता है हर जगह. yeah So I just want Williamson to come out on the right side of a of a championship match and mm-hmm. to finally see him have a smile on his face that's not from a commiseration point of view. all right and who do you see winning And I see Um, New Zealand winning. New Zealand winning ठीक है Ali same questions to you two questions okay. So who do I want to win? Honestly, Joe Moz ne bola exactly same answer. Like if you see a guy like Kane Williamson, ठीक है इतने अरसे से टीम को लीड करता हुआ आ रहा है, hasn't actually won any big championship or trophy. So for him to win that, it's going to be a very big thing. And all hearts out to that guy. He has done everything in the world of cricket. All he needs is a little bit of this excitement as well. So yeah, and I'd say, like, honestly, if you ask me, I see India winning, because उनकी टीम बहुत strong है, बिल्कुल काफी काफी बिल्कुल experience है उनकी टीम में. सही कह रहे हैं आप तो I'm just gonna finish this off here और New Zealand की team has been denied the trophy ICC trophy लेकिन विराट कोहली has also been denied a trophy ICC trophy और ये बहुत अच्छा चांस है विलियमसन और कोहली दोनों का to get that ICC trophy किसी को तो मिलेगी लेकिन who do I want to win I want New Zealand to win क्योंकि न्यूजीलैंड ने कभी कोई ट्रॉफी नहीं जीती और अब उनके फैंस को थोड़ा सा मिलना बनता है स्पेशली विद द हॉट फॉर्म they've been in test cricket और जो विलियमसन की लीडरशिप है who do I see winning I see India winning क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है मेरी नजरों में और इंडिया की बैटिंग उतनी ही स्ट्रांग है मैं बोलूंगा Yeah. कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग स्ट्रांगर है उनकी बैटिंग से थोड़ा सा चांस है कि बैटिंग में थोड़ा बहुत हो जाए लेकिन इंडिया इज कवर्ड फ्रॉम ऑल बेसिस रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइनल तो हम सारों होपफुली एंजॉय करेंगे इस मैच को और अब अगले टॉपिक पे चलते हैं और एक और चीज look forward to है कि they have fans back in the stadium now. एग्जैक्टली 70% capacity is allowed, so we'll finally see some actual noise and not some artificial one in the background. अच्छा यार ये बड़ी बात है सही कह रहे हो अगले टॉपिक पे चलेंगे अभी इमाद वसीम को शुड ही बी बैक इन द साइड बड़ी देर से पाकिस्तान क्रिकेट में बात हो रही है वो ड्रॉप क्यों है और उन्हें ड्रॉप होना चाहिए था उन्हें वापस आना चाहिए इसको ऊपर जाएंगे लेकिन उससे पहले छोटे मोटी बात कर लेते हैं उमर अकमल के ऊपर उमर अकमल ने अपना फाइन पे कर दिया है और आई थिंक 45 लाख था इतना कुछ which is a big amount of money और अब उन्होंने कुछ सेमिनार्स करने डोमेस्टिक सीजन में टू प्रूव हिमसेल्फ कि अब वो वापस आ सकते हैं क्रिकेट के अंदर तो just gonna start with you Moaz do you see Umar Akmal coming back? How do you see him coming back? PSL, domestic, क्या आप देख रहे हैं उमर अकमल का फ्यूचर क्योंकि बड़े लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं यार हिटर चाहिए हमें उमर अकमल चाहिए और वापस लाओ उमर अकमल कामरान को भी वापस लाओ उमर को भी वापस लाओ ये चीजें पढ़ता हूँ यार तो अब क्या रहा है इस पर मतलब मैं उमर अकमल को देखता हूँ मैं इसके ओल्ड मैचेस देखता हूँ उसकी ओल्ड परफॉर्मेंस में कहता हूँ यार ये बंदा क्यों नहीं आ रहा टीम में इतनी अच्छी बैटिंग थी और जब मैं इसकी आजकल हरकतें देखता हूँ टिकटॉक पे मैं कहता हूँ सही है नहीं लेके आओ उस बंदे को टीम में लेकिन apart from that little side note I think I think Umar Akmal after the team like he is one of those guys who goes for the shots who goes for the runs yeah मतलब कि ये नहीं है कि he doesn't go into a shell if there's balls to hit runs to score he'll try and get them लेकिन he hasn't been doing that consistently उसके off field antics थोड़े लोगों को push away करते हैं उसकी जगह से it's the same like how I said it इसके जो ऑफ फील्ड आप देखो जो भी इसकी वीडियोस आ रही होती है तो कहते हैं ये क्या बंदा है हाउ इज ही इंटरनेशनल क्रिकेटर तो इसी वजह से मिक्स ऑफ दैट लोग मे भी कहते हैं कि वी कि मे बी
इसको थोड़ा सही करके आओ. लेकिन as a cricketer, I think if he's scoring runs and I think if he is putting in the hard work, then give him a chance to prove himself. Like, personality aside, there's many cricketers who aren't the best of people. There's cricketers who are the best. Yeah, but if you're scoring runs or अगर आप अच्छे दिखा रहे हो कि आप can contribute to a winning team, a winning combination, so why not give him a chance? ठीक है. Ali, what do you have to say about that? So I feel like कि उसको ठीक है, you know, like कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट किसी की वालिद साहब की नहीं है, तो you know in order to be there you have to prove yourself first. तो I feel like you know जाए डोमेस्टिक में जाए खेले, you know prove himself, you know फिर PSL में आए, देखिए कैसा है. तो उसके अगर कोई लेता है और उसके साथ साथ ऑन एंड ऑफ फील्ड भी देखें, उसका सारा देखा जाएगा, ठीक है, क्या वो ऑफ फील्ड कर रहा है क्या नहीं कर रहा. तो आई मीन ऑफ कोर्स अगर वो ऐसी हरकतें करने लग गया वापस, तो आई डोंट थिंक यू नो ही हैज अ फ्यूचर इन पाकिस्तान क्रिकेट. ठीक है, यू नो जितनी उसकी बच गया करियर. सही बात है. और जो बात है, मैं जो देख रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल कुछ पिछले सालों में चेंज हुआ है और थोड़ी सोब्राइटी कह सकते हैं आई है, और मतलब थोड़े मतलब अब पता चल रहा है कि सेटल हो रहे हैं. उमर अकमल को मैं उस कल्चर में इस वक्त देख नहीं सक रहा, लेकिन ऑब्वियसली इफ यू स्कोरिंग रन्स, इफ यू परफॉर्मिंग लाइक मॉस सेड, लाइक यू सेड, देन यू हैव टू बी बैक इन द साइड. लेकिन अब उसके ऊपर द ओनस इज ऑन हिम. ही हैज गॉट वन मोर चांस. विल ही विल टू अवेल दिस चांस, और क्या वो फिर से जाया करेंगे जैसे उन्हें बहुत अपनी विकेट्स और चांस जाया किए हैं. अब ये बात हो गई. इसके बाद चलते हैं इमाद वसीम के ऊपर. इमाद वसीम हैज बीन लेफ्ट आउट ऑफ द पाकिस्तान साइड फॉर अ बिट, और उनके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि उनको वापस आना चाहिए कंसीडरिंग द वर्ल्ड कप कमिंग अप, द 2020 वर्ल्ड कप, और क्यों ड्रॉप किया उन्हें. तो अली, आई विल स्टार्ट विद यू. अब वो क्या लगता है कि इमाद वसीम उसकी जगह बनती है अभी, और क्या फेयर था उन्हें ड्रॉप करना? मुझे लगता है, इफ यू आस्क मी, एज पर मी, मुझे लगता है इमाद वसीम की जगह 100% बनती है टीम में. यू नो ऐसा बॉलर है आपके पास जो आपको ओपनिंग स्पेल भी करा सकता है, ठीक है, मिडिल ओवर में भी आ सकता है, डेथ ओवर के आसपास भी आपको करा सकता है बॉलिंग थोड़ी बहुत. उसकी हिटिंग भी, अब देखा जाए अगर पाकिस्तान टीम है, हमारे पास कोई ऐसा एज एन फिनिशर नहीं है, हार्ड हिटर नहीं है, ठीक है, पर अगर इमाद वसीम की आप थोड़ी हिस्ट्री उठा के देख लें तो he is known for some shots, ठीक है, he plays expressively, he doesn't you know goes there and like taps the ball for ones and twos mostly. तो ऐसा बंदा हमें अभी अगर देखा जाए तो टीम में बहुत कमी मसरूफ जरूरत आती है, पड़ती है. अगर देखा जाए इफ्तिखार अहमद कह रहे थे you know उस टाइप का बंदा है जो हमें चाहिए था फिनिशर, मगर चाचा जी भी कुछ काम नहीं कर सके पाकिस्तान टीम के लिए. तो आई फील लाइक ही उसकी जगह बनती है. अगर वो नहीं तो मोहम्मद नवाज, बट ईदर वन ऑफ दोस गाइस वी नीड इन द वर्ल्ड कप फॉर श्योर. मोहम्मद नवाज ने ही इमाद वसीम को एसेंशियली रिप्लेस किया है. तो मुआज, आई विल जस्ट टेक इट टू यू फ्रॉम देयर. मोहम्मद नवाज सही रिप्लेसमेंट है इमाद वसीम की? मोहम्मद नवाज अच्छा प्लेयर लगता है, मतलब कि उसने अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे के साथ में मैच जिताया था, वो 6 मार के. तो आई थिंक ही उसकी उसकी नवाज और इमाद वसीम का सेम ही रोल है टीम में, to come in the lower order around number 7, 8 and get them out of these tough situations or tough runs. Or Imad Wasim ne, I can say without any like bias or anything, he's done it. Usne kiya hai pehle. He's won us that game against Afghanistan in the World Cup. Lower order mein aake. Or you can't deny ke T20 mein he bowls the tough overs in the power play और tight रखता है. So I think maybe he deserves another chance to prove himself. But I mean, if selectors are really keen on finding other guys, then give them a good opportunity and tell them to work on these specific skills. Because agar Nawaz nahi kar sakta ye, if Nawaz isn't keeping it tight and isn't finishing matches, then maybe you need to look at other options. Imad Wasim hai ek option jo usne kiya hai pass mein, and abhi agar PSL mein continues to do it, so why not give him a chance? Matlab ke One more thing I'd like to add. अगर देखा जाए, क्योंकि लग नहीं रहा कि इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, you know, let's say this season के UAE में शिफ्ट हो जाएगा वर्ल्ड कप. तो अगर देखा जाए UAE का ट्रैक रिकॉर्ड इमाद वसीम को उठा के, so he's very economical there, very economical and very destructive too, you know, right at the beginning of the overs. So वो टाइट भी रख सकता है और you know विकेट्स भी आपको दिला सकता है. अच्छा, मैं बस बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं आप लोगों से उतना अग्री नहीं करता. मुझे समझ आ रही है आप लोग क्यों कह रहे हो, स्पेशली विद अफगानिस्तान इनिंग्स यू मेंशन वाज.
अभी मैं वसीम अकरम को भी सुन रहा था और वसीम अकरम ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इमाद वसीम क्यों ड्रॉप हुए, और ऑब्वियसली कराची किंग्स का भी थोड़ा सा फैक्टर है, लेकिन ही सेड कि फिटनेस की वजह से ड्रॉप हुए हैं ये वो. इन माय ओपिनियन ही वाज ड्रॉप्ड because he wasn't bowling well, he wasn't bowling up to the mark. पहले से मैं पता है उनकी बॉल स्पिन नहीं होती, लेकिन वो बॉलिंग उतनी अच्छी करा नहीं रहे थे. अगर आप बैटिंग की बात करें, बैटिंग इज जस्ट एन एक्स्ट्रा और एड ऑन है. वही जो शदाब खान के साथ केस है. अब अदनान भी पिछली बार पॉडकास्ट में आए थे, अदनान ने कहा था कि शदाब खान, इमाद वसीम, बैटिंग बैटिंग. एंड मैं सोच रहा था कि यार इनका मेन प्रायोरिटी तो बॉलिंग होनी चाहिए. ये दोनों बॉलिंग में गिर चुके हैं, तो जब तक ये बॉलिंग अपनी वापस नहीं लाते तो उस एड ऑन का क्या फायदा. तो इसलिए यहाँ पे मेरे थोड़ा सा हिचकिचाहट है इमाद वसीम के साथ. मोहम्मद नवाज इज बॉलिंग सो मच बेटर राइट नाउ. पिछले पीएसएल में आपने देखा था उन्हें तो एक मैच में बॉलिंग भी नहीं कराई थी इमाद वसीम ने, एंड ही वाज कैप्टन. तो ऑलराउंडर्स की तरह खेलते हैं ना. आई एम सॉरी, तो ऑलराउंडर्स की तरह खेलते हैं ना, टू ब्रिंग दैट लिटिल बैलेंस एंड में. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. बैटिंग हो सकती है प्लस, लेकिन आप उससे बॉलिंग कितनी कराओगे? आप उससे 4 ओवर कराओगे? कितने ओवर कराओगे इमाद वसीम से? इमाद वसीम से शुरू में अगर उसने अच्छी करा दी 2-3 ओवर्स तो और बीच में एक टाइट कराने के लिए तो मैं उसको ला सकते हैं वापस, लेकिन उसकी बैटिंग भी तो एक्स्ट्रा है. मतलब आई नो कि उसके लिए नहीं आया हुआ, लेकिन एक उस यू नीड अ 7 guy, number 7 who can bat to number 7 number 8 T20 में एटलीस्ट. और बैटिंग में भी देखा जाए, सॉरी गो अहेड, अगर 7-8 भी अगर मतलब कि अगर 7-8 में रन कर सकते हैं तो व्हाई नॉट. आई नो कि यू डोंट, वो टीम में इसलिए आई नहीं है, लेकिन यू स्टिल एक्सपेक्ट द रन्स टू बी स्कोर्ड दीस डेज. आई वुड से मे बी नॉट 10 years ago 5 years ago, लेकिन आजकल you expect the number 7 number 8 to score the runs. Yeah. What were you saying Ali before? I was saying कि you know number वही जो माज बात कर रहा था, number 7 पे आके almost you know scores an odd 20 runs 15-20 runs. That's very crucial, you know. अगर आप एक इनिंग एक टारगेट सेट कर रहे हो या फिर एक टारगेट के पीछे जा रहे हो तो those odd 20 runs and you know 10-11 balls is very crucial at that time. Definitely very true. और बैटिंग में हमेशा उन्हें दिखाया कि he has the ability. I'm hoping कि उनकी bowling increase कर जाए. We do see him back in the squad and see him performing well in the PSL to make that way. He's the captain of Karachi Kings. He really needs to step up क्योंकि बाबर आजम कप्तान नहीं है, वो कप्तान है किसी वजह से, तो वो दिखाएं वो क्या वजह है. अब अगले टॉपिक पे चलते हैं. PSL itself. PSL वापस आ रही है, पहला मैच भी है IU वर्सेस LQ, लेकिन उससे पहले थोड़ी और बातें कर लेते हैं लिया मुआज, छोटी मोटी. मोहम्मद आमिर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. वसीम अकरम ने कहा है कि he sees मोहम्मद आमिर की नीड है टीम के अंदर and he's pushing for मोहम्मद आमिर back in the squad. So Ali, we're just going to start off with you. I understand कि उनकी नीड है. He's a very excellent bowler, especially in the shorter format of the game. लेकिन जो हालात बन रहे हैं, do you see मिसबा की situation सारा कुछ, ये क्या पॉइंट था वसीम अकरम? I feel like कि अगर देखा जाए जो सिचुएशन इस हिसाब से बनी हुई है with the current coaching जो है हमारी, I don't see him coming back necessarily, मगर you know हो सकता है, you know you never know what goes on in Pakistan cricket. मगर अगर मेरी opinion ली जाए तो I would love to see that guy in the playing 11 right now at this point in time, you know, where we need a bowler like that, and an attack bowler with Shine Shah Afridi, you know, if we with have that spare, with Haris Rauf. मगर अगर but now अगर because अगर देखा जाए मोहम्मद आमिर नहीं है, so that's why we're pushing Haris Rauf as the second, you know, bowler to open the attack. मगर अगर होता है, imagine, you know, Mohammad Amir and Shine Shah Afridi in UAE, in those wickets, lethal, you know. Definitely there's a lot of positive चीजें जो ले सकते हैं मोहम्मद आमिर से, लेकिन उनका नेगेटिव एटीट्यूड भी है जो टीम को शायद बेसिकली नीचे लेके आ जाए. आपके इस हवाले से क्या कहना है? मैं तो नहीं देता टीम में उसको. फिर बोलो अली. Okay, so the negative attitude देखें है, like I'm just saying it as in a situation where everything is fine, you know, Mohammad Amir is not negative. पहले उसका ट्विटर की स्टोरी जो करना करे यार वो उसमें. But yeah. But I mean, देखो ना, attitude change करना होता है हर किसी को. But I feel like it's his time to change his attitude. He's becoming an Umar Akmal now. I would say definitely. He's got a very smart wife और उनके साथ उनका जो भी है उन्होंने citizenship भी ले लिया, बहुत अच्छा काम किया. She's very smart लगता तो ये, तो I would just recommend कि वो ही उनका ट्विटर भी संभाल लें. लेकिन आगे चलते हैं अब. We're gonna go to इमाम उल हक की जो स्टेटमेंट है. उससे पहले, yeah, did you hear about Wasim Akram and what he said about the team? No, go on. Wasim Akram ने अभी I think एक दिन पहले कहा था कि
उसको काफी मे बी ऑफर्स आए होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोचिंग करने के लिए, लेकिन वो कभी भी कोच नहीं करता पाकिस्तान टीम को, बिकॉज ही सेड ही कैन नॉट टॉलरेट मिसबिहेवियर। एक ऐसा बंदा जो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये कहा तुमने। Yeah, and essentially तो nonsense ये too. का है, नॉनसेंस। he can't tolerate misbehavior and nonsense, which I fully agree. मतलब कि वसीम अकरम अगर आप देखो, he is right now is one of the most respected cricket analysts in the world, commentators slash coach slash guru, whatever you want to call him. And he hasn't had the Pakistan cricket coaching job. लेकिन फिर भी लोग उसको इतना highly regard करते हैं और कहते हैं कि वापस आओ, we want you to coach him. लेकिन I think he's right in his view कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट में जाएगा तो उसकी बदनामी हो जाएगी किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कुछ बोल देगा। And I think that's what he doesn't want. And he's right. उसका पॉइंट ये था 100%. कि रवि शास्त्री के साथ वो कंपैरिजन कर रहा था कि इंडिया में ऐसे नहीं होता कि अगर कुछ हो तो कोचेस को बोला जाए, आखिर में प्लेयर्स ही खेलते हैं, Yeah. उनका कहना ये था। Yeah. लेकिन मुझे नहीं लगता वो आ सकते हैं इस वक्त कोचिंग के अंदर, कंसीडरिंग हिज हिस्ट्री व्हिच इज वेरी वेल कवर्ड ऑन द चैनल, इज गोना कॉज एन आउटरीच। जाहिर है कि दूसरे लोग भी आ चुके हैं, वकार यूनिस वगैरह। आई वुड पर्सनली वांट वसीम अकरम बैक। थोड़ी बहुत बात होगी, मुझे लगता है इस वजह से वो इससे दूर ही रहना चाहते हैं, इन चीजों से दूर रहना चाहते हैं। ही फोकसेस ऑन 2 C's राइट नाउ, एंड दैट इज क्रिकेट कमिटीज एंड क्रिकेट कैंप्स। और फिलहाल वो उधर ही हैं, क्रिकेट से वो दूर हैं, तो वो चाहते हैं उधर ही वो यूज हो। अली, आपने इसके बारे में कुछ कहना है? नहीं, I mean, yeah, exactly the same thing कि एक respected bowler है, legend of the game, ठीक है। अगर आपको पता है कि पाकिस्तान cricket can be toxic, ठीक है, can be very toxic sometimes, तो it's gonna for sure destroy his reputation. अभी मैं देख रहा था विराट कोहली, mental state. yeah, his mental state too. So Virat Kohli just I think he was doing some Q&As on his Instagram because he was in quarantine. So he was asked who would be the bowler you'd like to face, who would have troubled you from the past. So he said Wasim Akram. So if you see a guy like that and a batsman like that, so अच्छा, उसकी वीडियो देखी थी जो आई हुई थी 1-2 दिन पहले, 45th ओवर में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, with the old ball he was reverse swing, yeah. Oh, bro, crazy. वो इधर जो Insane. unbelievable bowler, man. And bro, and back when दो न्यू बॉल्स नहीं होती थी, that was one ball, 46 overs old. Yeah. अच्छा गाइस, आगे चलते हैं। सुहेल खान ने बोला कि वकार यूनिस की मैच फिक्सिंग प्लस स्पॉट फिक्सिंग पर बात क्यों नहीं की जाती, और इस चैनल पे तो काफी की गई है। आई गेस अभी इसलिए नहीं की जाती क्योंकि वो इतने देर से कैरी हो रहे हैं पाकिस्तान टीम में, so nobody really wants to go into that, dive deep into that. So I would say that's mostly the reason, because he's still affiliated with Pakistan cricket, और अभी इतनी पुरानी बात हो गई है और नए फिक्सिंग के किस्से इतने खुलते हैं, पुरानों को टाइम नहीं मिलता। तो सुहेल भाई, आपका ये रिप्लाई है। उसके बाद अब चलते हैं एक छोटे टॉपिक पे, बड़ा मजे का टॉपिक है ये। इमाम हक ने कहा है कि उन्होंने 10,000 टेस्ट रन बनाने हैं। मुझे 3 बार ही पढ़ना पड़ा था, ठीक है, और हर किसी की होती है कि भाई आरजू होती है, तमन्ना होती है कि बेस्ट बनने हैं वो जो भी, लेकिन is this realistic, man, from a fan's point of view? Ali, what do you think about it? Anything is possible in the game of cricket. Shut up, but I mean, अगर honestly देखा जाए नहीं, मैं तो सोचो बाबर 10,000 बना ले भाई। Yeah. I don't see, honestly, I don't see Imam Haq making 10,000 test runs. अगर देखा जाए उससे बहुत अच्छे अभी हमारे पास इस लेवल पे openers present हैं. So for him to be in a team and to be a spearheaded opening, for us, it's going to take him at least 2-3 years. और फिर देखा जाए अगर 2-3 साल इसके करियर से निकाल दो तो 10,000 तो छोड़ ही दो, बहुत दूर की बात है। I think बना सकता है। अच्छा, 5-6 हजार। मुआज उसने तो कहा है, मोहम्मद असीम ने कहा कि तो टेस्ट प्लेयर है ही नहीं, ठीक है, उसके ढके छुपे लफ्जों में टेस्ट प्लेयर। उसके ऊपर नमान ने भी काफी खेल किया था, डॉक्टर साहब ने। आप कह रहे हो बना सकता है, ये मजाक कर रहे हो आप? मजाक कर रहे हो ब्रो? नहीं, एक अच्छा प्लेयर है आउटस्टैंडिंग, लेकिन अब बना तो सकता है, लाइक बना तो सकता है, मगर अगर देखा जाए, let's hear him out. What do you have to say? क्यों, why not? Because he's not even in the team and he's not really. So what? There's many players who weren't in the team back in the day, and now they were, and then they scored 10,000 runs. Maybe he can score 5,000 and come back in the team. मैं मान सकता हूँ वो he can be in the team, लेकिन 10,000 रन bro सिर्फ यूनुस खान ने बनाए हिस्ट्री में। History. For Pakistan cricket. I mean, it's that typical. You aim for 10,000 and you settle for 8. Yeah. So I mean that's still high. Let's just talk it up. लेकिन मेरे को थोड़ा bias भी होगा ना for Imam Haq, because I've played against him, I've seen him, and I hope he scores 10,000 runs so I can say I played with that guy. So you can say that. लेकिन
but right now doesn't hold much. Before we move on to the PSL के ऊपर बात करनी है, पहला मैच आ रहा है और भी टीम्स के ऊपर बात करनी है. हम तीनों बहुत शौक है हम तीनों को PSL का, लेकिन PSL के टॉपिक के ऊपर ही Naseem Shah was included even though he didn't pass the COVID protocols in time, और उनको लाया गया है. और मुझे लगता है कि obviously you're bending the rules for him, लेकिन considering the player अच्छा तो होगा उनके लिए, लेकिन I'm not sure how I feel about that bending the rules. Moaz, what do you say about this? I don't agree at all. Like, you shouldn't bend the rules. There's COVID protocols, SOPs आए हैं एक reason के लिए. ये थोड़ी है कि फिर से लोग इसको ऐसे ही are taking with a grain of salt. मतलब कि that's how you uh, don't secure your biosecure bubbles. ऐसी हरकतें करके कि old PCR test ले आए कि mingling कर रहे हो, कोई बात नहीं हो जाएगा. This is that typical Pakistani mentality that's coming back again, and that's what I did not want to see at the start of the PSL second edition or second part of it. और वो फिर से हो रहा है, तो I really hope कि ये एक one off ही है and they take a real hard look before doing this kind of. And there are no more bending rules. Baki rules bend now, kam se kam. Yeah. Yeah. So Ali, briefly, where do you see this whole situation? Yeah, honestly देखा जाए कि very ashamed, you know, ये हुआ है. Naseem Shah is included back in the squad. देखा जाए when Dean was asked कि 24th को everyone should be there at the hotel with their negative PCR tests for no more than 48 hours ago. And that guy brings in a test from 18th of May. Okay, तो अगर ये देखा जाए 18 that's a week old PCR test, ठीक है. तो I mean if you are चलो ठीक है, he's a kid, everything is understandable, उससे गलती हुई, genuine mistake होगी. I mean genuine mistake कह सकते हो उससे, new in the cricket world, ठीक है, genuine mistake कह सकते हो. But अगर आप लोगों ने decision ले लिया है for him to not be included in that biosecure bubble, then period, he should not be included in that biosecure bubble no matter what. तो ये देख के बहुत शेमफुल बात है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा आर्टिकल पढ़ा था, बताया जा रहा था कि 3 टाइप ऑफ बबल्स बनाए जा रहे हैं यूएई में. एक जो प्लेयर्स का होगा, एक जो स्टाफ का होगा, और एक जो ग्राउंड स्टाफ का होगा. तो 3 टाइप्स ऑफ बबल होंगे, और तीनों जो है बहुत ही टाइटली सिक्योर्ड बबल होंगे. इन केस एनीवन इज टेस्टेड पॉजिटिव, they're going to be out for 10 days, quarantining for 10 days. तो कह सकते हो कि उनका PSL तो चला ही जाएगा फिर. बिल्कुल. तो ये बात होगी नसीम शाह की. Naseem Shah, hopefully you do well because you are a future star of Pakistan. We all support you. तो देखते हैं आप क्या करते हैं, लेकिन आइंदा खुदा के लिए ऐसी stupid हरकतें ना करें, rules follow करें. You're not a kid anymore. और आइंदा से मतलब बेइज्जती से बचाएं पाकिस्तान को. Final topic रह गया हमारा अब, और वो है PSL 6. It's starting very shortly. पहला मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और इसी मैच के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, बाकी टीम्स के ऊपर चले जाएंगे. बाकी टीम से क्या चांस कब है ये स्केड्यूल? I don't think the schedule's out yet. I saw June 1st, लेकिन Ali said the schedule is not out yet. Yeah. So वो इन्होंने schedule पहले का बनाया था, almost I think a month ago when they wanted to resume PSL. But वो बात यहाँ आ गई थी where they were still deciding on if PSL is going to happen or not. So I feel like they just wanted to see कि कितने लोग पहुँचते हैं किस टाइम पे, और कितना quarantine period होता है उसके बाद, you know, so they can start the matches and get out with the schedule. लेकिन ये बात undisputed है कि पहला मैच होगा IU versus LQ का. ये बात पक्की है, और ये एक और बात पक्की है कि बहुत लंबी स्ट्रीक चल रही है विंस की IU की against LQ. I think they're at -7. That's ridiculous. ठीक है, think about this. 7 matches on the trot. LQ हारे IU से, and IU hasn't even been on the top of the team. Yeah. भाई मजाक हो रहे हैं यहाँ पे. कोई एक और मैच है, -8 की तरफ जा रही हैं. मुझे लगता है हम पहुंच जाएंगे. No, I don't think it's gonna go -8, bro. भाई IU की क्या, ठीक है, IU की पहले बात कर लेते हैं. हमारे पास भाई लाहौर, देखो लाहौर कलंदर इस एडिशन में लाहौर कलंदर has shown that they are here to play, you know. तो you know इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले थोड़े संभल के रहो भाई, थोड़ा जो है संभल के रहो. स्ट्रीक चल रही होती कौन संभलता है? Streak starts to end. समझ रहे हो? Streaks are there to break. Yeah, streaks are there to break. समझ रहे हो? तो streaks are there to break, bro. Records are there to break. Everything is there to broken. तो फिक्र नहीं करो उसका. ये जलालत रहेगी, लेकिन ठीक है, मैं समझ रहा हूँ. We'll talk about this. We'll talk about this when Lahore Qalandar thrashes Islamabad United in the openings. ठीक है? घर छोड़ गया. Support is act. Moaz, what about you?
Bro, I would just say कि keep your IU guns at home और और ये like पास की बात छोड़ दो इस साल जब हमारे players आए हैं you'll see what's gonna happen and whenever the first match is scheduled we'll have a chat and फिर देखते हैं कि streak है या नहीं Guys, है. हमेशा it's इस्लामाबाद amazing to watch underdogs ही रहा है. a Lahori guy with an Islamabadi boy. हमेशा अंडरडॉग्स ही रहे हैं. आप लोगों क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, आप पूरी दुनिया ले आओ ना, आप लोग फिर भी हमें नहीं हरा सकोगे उस डेट को जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई. You will not beat the streak. You will not beat us. Bro, yeah, I'll keep talking your shit. Yeah, keep talking, keep bowling while we back you are the ground. Bro, amazing. मसला पता है क्या है? Honestly मसला ये है कि इस्लामाबाद के वो प्लेयर्स नहीं है कि बाहर चलेंगे और लाहौर की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है प्लस जो उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं रऊफ हो गया, शाहीन हो गया, they're just too good और प्लस अब राशिद खान भी आ गया. अगर देखा जाए सोहेल अख्तर दैट गाय इज गोइंग बनानास मैन लाइक उसकी हिटिंग जो है लाइक अगर देखा जाए पिछले सीजन में और इस सीजन में आई डोंट नो कहां से आ गया क्या खा कर आ गया एकदम से उसकी अमेजिंग हिटिंग होगी एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू. डेविड वीसा भी कर सकता है बीच में. David Villa I think he's withdrawn, right? Is he? I believe David Villa has withdrawn. But I'll have to check on that क्योंकि withdrawn की भी लिस्ट ऊपर नीचे होती रहती है as you've seen. लेकिन आखिरी बार मैंने देखा था David Villa had withdrawn. राशिद खान भी तो आया है. Yeah, Rashid Khan's back for Rashid sure. Rashid Khan आया. Yeah, तो we'll see. उसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई आ जाएगा. For example, बहुत players हैं जो आयु से गए हैं. आयु के पास जो players हैं अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हसन अली probably best player है आयु का. Shadab Khan is right up there लेकिन he's not. He's the best player at IU. Yikes. हसन अली is the best. Bro क्या हो गया? हसन अली इस वक्त इतनी terrific form में सबसे ज़्यादा विकेट लिए पूरी दुनिया में उसने साल. क्या बोल रहे हो यार आप? उसके अलावा रुहेल नजीर भी है हमारे पास और ये सारे यंगस्टर्स हैं और इतना हुसैन तलत है हमारे पास. Oh yeah, you keep him. Hussain Talat bro, like just that's it. Don't talk anymore, bro. उसको मैंने आउट किया था. उसको मैंने आउट किया था एक दफा. अच्छा हुसैन तलत को आपने आउट किया था. यार देख लो बॉयज. तो अब बताओ. और क्या बता सकता हूँ यार. अब फहीम अशरफ है ठीक है. वो ये बोल रहा हूँ कि इतने प्लेयर्स नहीं है. यू हैव द यूजुअल सस्पेक्ट्स एज वेल. आप लोगों का रोटी गैंग है ना. रोटी गैंग एग्जैक्टली. और हसन अली मैं यही चाह रहा हूँ कि हसन अली कुछ कर दे लेकिन बैटिंग में हम बहुत वीक नजर आ रहे हैं मुझे. होपफुली वी कैन पुल ऑफ अ मिरेकल आई वुड से अगेंस्ट लाहौर कंसीडरिंग द टीम. मिरेकल मैं बोल रहा हूँ कि आपकी टीम बहुत स्ट्रांग है लेकिन आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट वी आर गोना विन बिकॉज़ यू गाइस आर जस्ट चोकर्स. इस जगह से कॉन्फिडेंट आ सुन रहे हो अगर अपनी टीम कितनी बोल रहे. I'm not a Lahori and I don't support Lahore Qalandar. But I will support Lahore Qalandar against Islamabad United. Let's talk about some other teams in that case. You're not Lahori, you're not Islamabad. तो मतलब आप किस टीम को support करेंगे? For now, I'm supporting Karachi Kings, the defending Winners, champions. obviously. I've been supporting them since last Glory Hunters. season. Glory Hunter. Oh wow! Look at you guys. ठीक है bro. अभी जीते हैं तो अब अगले में support कर देंगे. I've been supporting them since last year, so there is no need. They became champions. जीते तो support कर दिया ठीक है. Yeah, they became champions because I was supporting them. अच्छा यार सही. So you supported Zalmi when they became champions. ठीक है. Supported. Team है अली जो कराची की टीम है. It's absolutely unbelievable right now the way they're playing. जो coaching staff है वसीम अकरम उसके बाद डीन जोन्स के बाद जिस तरीके से वसीम ने टेक ओवर किया. बाबर आजम. Imad Wasim is the captain. Muhammad Amir has a lot to prove. Yeah. So Karachi Kings looks like the favorite for this PSL. For sure. देखा जाए हर्षल गिब्स जो इनका कोच है. I feel like उसने कहा they could have included 2 more foreign players, but he said no. Why not give chance to local talent, local youngster talent? So yeah, so that was amazing from that guy to see. Also काफी insane. Like the top order देख लो आप. Sharjeel Khan, Martin Guptill, Babar Azam. Look. अब उसके आगे क्या देखा जा सकता है? मजा आ गया. कसम से मजा आ गया. वो देखा था कि गर्मी में कैसे खेलेंगे. Yeah, coolers like I think coconut water, ice collar, lighter. आप दोनों से पूछना चाहता हूँ because you've both been staying in the UAE for a while और फिर आप लोग अब कनाडा में आ गए हो लेकिन इस time of the year में usually PSL नहीं होती. February में होती है. तो इस वक्त तो क्रिकेट भी नहीं होती है UAE में. भाई UAE में क्या मौसम होता है इस वक्त? Bro मैं अपनी 45+ degrees. Bro मैं अपनी अब्बी अम्मी से बात कर रहा था एक दिन पहले कह रही थी कि 50 डिग्रीज हो रहे थे वहाँ पे. 50 degrees? Yeah. अच्छा गाइस मतलब शुक्र है अफरीदी नहीं है उसको बेचारे इंजर हो गए लेकिन शुक्र है उसकी एज चली या नहीं चली. असली एज उसकी पता है यार मतलब खैर इसमें डिस्क्लोज करते लेकिन
खुद डिस्कस किया मैं That's a whole new topic to discuss. that's something we don't need to discuss. अब और इतनी एजेस हैं, मतलब मैं इतने लोगों के इस करंट टीम में नाम ले सकता हूँ ना. Does he really look this age? Does he really look this ब्रो age? Oh मैंने my एक देखी God, that word. एजेस के बाद मैंने देखा था एक फुटबॉल प्लेयर था घाना का. It was like the guy, he was born in 1990 Mhm. but his mother died in 1986. Wow. So they're gonna discuss that. यार अच्छा तुम ना बात करो, तुम तो Yikes. और कैलेंडर में रहे हो ना जो राशिद खान को रख रहे हो, जो अभी तक what 18 है. चलो बस कर दो. भाई he grew up fast, okay? He had to mature quick. Yeah, he's not gonna admit it here. अच्छा तो ये टीम्स हो गई. इसके अलावा जो पेशावर हो गया, मुल्तान हो गया, क्वेटा हो गया, उसके अलावा कोई रह गया? I think that's all of them. That's So all. what do you see with Multan? Multan ने मोहम्मद रिजवान, we've seen कि he's really come out for this team. शान मसूद को रिप्लेस कर दिया है. तो Ali, what about you? Multan, Sultan, where do you see them in this tournament? And together with Peshawar Zalmi, इन दोनों की टीम्स को साथ कर दें. Okay, yeah. So देखा जाए अगर honestly shocking एक डिसीजन था एकदम से, जैसे मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना दिया और शान मसूद को साइड लाइंस पे रख दिया. That poor guy is not even in the playing 11 now. So from glory to what you can all see that. But yeah, 0-0. But अगर देखा जाए मुल्तान की team strong. I haven't seen their squad right now, but I feel I'm hoping कि James Wins खेल रहा है. If he's opening with Rizwan, it's going to be a lethal combination for them. And देखा जाए overall performance जो थी ठीक थी पिछले like 14 matches में इसकी मुल्तान सुल्तान की है. I feel like they could have done better. They choked a couple of games. They could have taken the easy wins, but they didn't. With that, Peshawar Zalmi, they're always the dark horses, you can say, of PSL. Come out from nowhere and just take the game away. ऐसा कभी नहीं हुआ कि they had like some extraordinary players at any time, compared to other squads, but they always, sometimes just they come from underneath. come out. Yeah, they just come on top. And I feel like the David Miller inclusion, Peshawar Zalmi, is gonna really strengthen their batting attack and power hitting, which अगर देखा जाए पेशावर ज़ल्मी में इतने पावर हिटर्स नहीं थे एक्सेप्ट कामरान अकमल ओपनिंग करता है. अगर देखा जाए आपने, अगर कामरान अकमल फेल होता है तो थोड़ा ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप भी डगमगा जाती है. तो आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया ज़ल्मी और मुल्तान को. इन केस यू वांट टू ऐड एनीथिंग वाज यू कैन डू दैट. लेकिन मैं आपसे बेसिकली क्वेटा के बारे में पूछना चाहता हूँ. क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि वो आपकी फेवरेट टीम है, कप्तान भी आपका फेवरेट है उनका. तो आप उसके बारे में बताएंगे. वेयर डू यू सी क्वेटा गोइंग इनटू दिस? नसीम शाह भी वापस आ गए हैं और सरफराज ने अभी जैसे कप्तानी की थी पिछले पूरे सीजन शुरू हुआ था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था. Bro, I don't think Quetta has good leadership to make it to the final. Leadership पे आप direct पहुंच गए भाई. I think no, all jokes aside, I think no, they have a good leadership. Richard is still there. I think he still provides them with good advice every now and then. और मुझे लग सकता है कि if they perform well, if they keep doing their basics right, so I think they have a good chance. मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता उनकी टीम के बारे में, लेकिन the one guy that I do know, I don't like him, and I mean I hope they do well. Lekin from a personal fan point of view, I'm not a big fan of Quetta or their top guy. अच्छा ठीक है. Quetta is gonna क्वेटा के लिए मैं डालना चाहूंगा. अगर जब सीजन स्टार्ट हुआ था, Andre Russell Quetta में किधर गया हुआ है? Yeah, Russell Quetta में. Yeah, I want that guy to hit some sixes, but that's about it. अब आप आगे क्वेटा की तरफ. ठीक है, अब स्टोरी बताएं आप. तो जब शुरू हुआ था PSL, देखा जाए क्वेटा की टीम जो थी looked like basically the best team on paper. Chris Gale, ठीक है, Faf du Plessis, Dale Steyn, look beyond that. I mean, insane. And Ben Cutting as well. So insane, foreign lineup for them. Yeah, Dale Steyn played for Quetta in the early seasons. Yeah. इसी उसमें, इसी लीग में. अच्छा ठीक है, वो यूनाइटेड के बाद क्वेटा में आ गया. सही. Yeah. So he was in Quetta. तो insane team थी on papers, but leadership अगर देखा जाए तो behavior जो था ठीक है, ये सरफराज अहमद का wasn't pleasing to any cricket
fan, ठीक है, जो उसने फील्ड पे हरकतें कर रहा था, you know, getting pissed off for no reason, कोई ball miss करता तो start yelling from behind the stumps. Insane. No one does that to anybody. ठीक है, so you need yourself, you know, you need to compose yourself while you're leading a team. क्वेटा के ऊपर ही बस मैं एंड ऑफ करना चाहता हूँ। सरफराज के ऊपर आपने बात की, उसकी लीडरशिप के ऊपर, ये वगैरह बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ही विल इंप्रूव। आई फील ही इज लर्न फ्रॉम इट, ही शुड लर्न फ्रॉम इट। दैट्स Azam Khan is in Quetta too, right? Azam Azam Khan Khan, and Yeah, Husnain. Azam Khan, yeah. आजम खान is Yeah, both of them, Husnain and Azam Khan. हसनैन की मैं बात करना चाह रहा था कि सरफराज जो उसने बैटिंग बहुत अच्छी की थी, अभी आपने देखा था पिछले सीजन में। ही I वाज know he वेरी scored 74 किया था ना एक मैच में उसने. टॉप बैट्समैन था Yeah. क्वेटा का, और इसलिए वो पाकिस्तान टीम में भी कैरी होते रहे, बिकॉज़ ही डिडंट फेल इन द पीएसएल। ही प्रूव्ड टू एवरीवन कि ही कैन बैट। और उसके He's अलावा good आजम he's खान good at के carrying the drinks. ना उसके अलावा आजम खान को देखना है। आजम खान की मैंने एक दो पिक्चर्स देखी रिसेंटली, लग रहा है उनका वेट थोड़ा सा गिरा है, तो आई रियली वांट हिम टू परफॉर्म वेल द मोस्ट इस पूरे पीएसएल में, ताकि हमें वो मिडिल ऑर्डर की जगह मिल जाए। Agreed. उमर अकमल करते हैं लोग सोशल मीडिया में। Moin Khan said that he can fulfill the role in the middle order we for are Pakistan. all saying that Moin it's just Khan. Yeah, we're all waiting. Yeah, Moin Yeah. Khan is his father, उसके Oh, बस coach. मोइन खान इज हिज फादर, राइट। और yeah. उसके बाद Yeah. बस एंड करना है, मोहम्मद हसनैन के ऊपर बात करेंगे। मोहम्मद हसनैन बहुत देर से हम कैरी कर रहे हैं उससे। आई एम वेरी इन फेवर ऑफ द गाय, क्योंकि शॉर्ट बॉल मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रिसेंटली वो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अप एंड डाउन रहती है। इज नॉट बीन एबल टू पिक अप द विकेट्स फॉर पाकिस्तान, और ये इसलिए मुझे लगता है उनके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा। डू यू सी मोहम्मद हसनैन बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द वर्ल्ड कप स्क्वाड अगर वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दें इस पीएसएल में? पता है उसकी टीम में अभी अगर आप देखें वर्ल्ड कप स्क्वाड में, आई थिंक गिव हिम अ चांस इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड फॉर श्योर. उसने आई मीन उसको टी20 में हर स्क्वाड में लेकर जाते हैं उसको. देयर इज अ रीजन दे टेक हिम विद हिम, सो आई थिंक ही इज इन द स्क्वाड. ही शुड बी इन द स्क्वाड. लेकिन एज फार एज द प्लेइंग 11 goes, I don't see him in the playing 11 unless there's a big injury to any of our main fast bowlers. I mean, Shaheen Shah, Haris Rauf, Hassan Ali. And if you have these three guys, I don't see any of them being replaced for Hassanan unless, like I said, injury. So we're just gonna quickly wrap this up very quickly. मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि he wants back in, वो चाहते हैं कि वो कोचिंग करें या पाकिस्तानी टैलेंट की, यंगस्टर्स वगैरह की। I think that's completely reasonable, और उससे बेहतर कोई सीम बॉलर था नहीं। हम सारे एग्रीमेंट में इसमें कि we need him back if he's willing, right? क्योंकि हमने इतना माफ कर दिया सालों को भाई, अब क्या आपने आसिफ को भी जलील करना है? और अगर वो चाह रहे हैं a guy like Asif, अगर उससे आप थोड़ा भी सीख लेना तो it's going to go a long way for you, a very long way. The batsman, he has troubled all around the world in every wicket, on every wicket, ठीक है, in every country. You know, that guy was just amazing. It was sad for him to go that way, but you know, life is It is what it is. It's your own rosy actions beds. that define you at the end of the day. True. और वही हुआ था आखिर में, और अब इंशाल्लाह आगे उनकी तरफ से let's see बेहतरी होती है नहीं होती। ये था दूसरा व्यू पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 28. We had a lot of topics on our discussion. मुआज और अली, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके, और until next time, I'm just gonna say bye bye to these guys. So आप लोग इन्हें खुदाफिज कह। Allah Hafiz everybody. See you next time. Hopefully you'll join us and we can have another fruitful discussion. Yeah, for sure. Thank you guys for watching and for taking your time out. Inshallah, see you next time. Take care and stay safe. Alright guys, ये होता है वीकली पॉडकास्ट, दूसरा व्यू पॉडकास्ट लाइव होता है आप सबके लिए, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको फिर से मिलेंगे like every week. So until next time, take care of yourself and अस्सलाम वालेकुम.